So let's first try to go one of my very favorite question, and this question was from Yurodov. Okay, and this is one of the very fundamental question. Let us try to do this problem. Okay, the question is very simple, a straightforward question, but you can see that all the beauty of static friction in this particular problem. Okay, so let's try to go for this one. This is a very fundamental question. What is this problem? This problem is basically there is a wedge which has angle alpha, or let's say this is angle theta, and there is one pulley, and there is mass m1, and there is a rope attached to this particular pulley, and this is hanged with another mass, that is m2. So this mass is m2. Okay, this mass is m2, and this mass is m1. So you can assume this mass is m1, and this is your wedge, and this angle is theta. Okay, and the another given parameter is that coefficient of static friction between m1 and wedge is mu, and there is not any frictional force between this surface and this, because this is little bit away from there. So this is m2, and the coefficient of friction force is mu. My question is that what will be ratio of m1 by m2 or m2 by m1? Let's calculate the ratio of m2 by m1. What will be ratio of m2 by m1 such that both of masses will rest with respect to wedge. Okay, are you getting my point? You have to calculate what will be the ratio between the masses such that both remain rest with respect to wedge. So this is a very interesting problem. Now, can you please give me answer that whether this masses, this ratio will be given in form of some equality or inequalities? Is that some range or some value? Range, sir. Range. Why range? क्यों range क्यों होगा? सर फ्रिक्शन का क्या? फ्रिक्शन तो है, there is some friction mu, वो तो है. Yes, sorry, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Sorry, both mass expected to? Both are dependent to each other. Both are dependent to each other. Yes. तो उससे क्या होगा? Anyone? That is not a correct answer. मैंने सही आंसर पाया नहीं है. Any another person? Okay, let me explain you. Now देखो, अब अगर ये पार्टिकल, दोनों पार्टिकल रेस्ट पे है, then what I have to do? I have to make provision such that I have to restrict m1 in downward size, or I have to also restrict that m1 will move upward. I have to restrict that m1 will move downward as well as m1 will move upward. So हमें ये provision देना पड़ेगा कि m1 either upward भी ना जा सके और downward भी ना जा सके. Then what will happen? So if we are just watching the motion, then if m1 will go upward, the frictional force will act downward, and hence the condition will be entirely different. And same time, if m1 will go downward, the frictional force will be act upward. So we have to
make sure that the particles cannot be do these two motion. आपको एक मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, दोनों मोशन को रिस्ट्रिक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ m2 is very 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 large than m1, then what will happen? It will just go downward. And same time, if m1 is very 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 large than m2 such that it can be overcome this friction, then obviously m2 will go upward. So there are two type of motion can be possible. So what you have to do, you have to make sure that neither m1 will go upward, neither m1 will go downward. Are you getting my point? समझ में आ रहा है? So how we will Yes, sir. approach this type of problem? और ये इस तरह के problem JEST में, TIFR में हमेशा आते हैं, because you have to do analysis. आपको एक value नहीं निकालना है equation of motion solve करके. You have to do some analysis. So now let us try to go for a case 1. Case 1 में हम लोग चलते हैं. What is case 1? If m2 will go downward, m2 will go downward. ये हमारा first case है. So we have to restrict this thing. m2 will go downward. हमें इसे पहले तो हम ये मोशन को देख लेंगे क्या है मोशन होने का, and after then we have to find those conditions which will be not satisfy either this one or next one. So this is the condition where motion is going to happen. Are you getting my point? ये condition किसके लिए लिख रहे हैं कि आपका motion हो सके. This is very interesting point. Now let us try to go for this. So if m2 will go downward, so what is my we have to go for the free body diagram. So this will be m2g, and there must be some tension, and this is same rope, so there must be some tension into this direction. m1g will be in this direction. In here you have m1g sine theta, and in this direction this is your perpendicular to plane, and we have to resolve all the masses in the parallel to plane of motion and perpendicular to plane of motion. So this value is nothing but what? m1g cos theta, and here is your normal, and this will be your normal because this is pushing, the m1 is pushing it downward. The normal reaction, the force which is responsible for normal is m1g cos theta, and these two things will be balanced to each other because there is not any vertical motion. Yes. So now what is condition? When it is going to move downward, m2 will move downward. That means m2g must be greater than tension. तभी तो ये downward जाएगा, isn't it? सर थोड़ा लेट हो गया आने में सर. कोई बात नहीं, don't worry. So m2g will go is greater than what? Tension. Are you people comfortable? यही होगा ना? Now, Yes. okay. Now you can see this tension must be greater than m1g plus frictional force. In which direction frictional force is going to apply? If it is going downward, it will go upward. Then frictional force is in which direction? Towards downward, isn't it? This is your frictional force. So second condition is that this is for the m2. The second condition is that T must be greater than m1g sine theta plus frictional force. And what is your frictional force? The frictional force from here, this tension must be greater than m1g sine theta plus mu into n, and n is nothing but m1g cos theta. So if this is your condition, अगर आपके पास ये condition है, so what is meaning of that? Meaning of that, m2g is greater than t, t is greater than this one or this one, then m2g must be greater than this one, isn't it? यही होगा ना? So for this condition, we can just go for m2g must be greater than m1g
sin theta plus mu m1 g cos theta, and we have to find the ratio. If ratio is something like that, m2 by m1, and which is greater than, g will be cancelled out, greater than sin theta plus mu cos theta, then what is your condition? आपका condition क्या होगा? Your condition is that m2 will go downward and m1 will go upward. So this is condition for the motion. Which type of motion? Such that m2 will go downward and m1 will go upward. Are people comfortable? Yes, sir. है ना? अब हमारे पास Yes, ये हमने फर्स्ट कंडीशन देख लिया. लेट्स ट्राई टू गो फॉर अ सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या होगा? मैं यहां पर यूज कर रहा हूं सेकंड कंडीशन के लिए. ओके, this is your mass, this is your m2g, this will be your tension, this will be your tension, and this force will be something like this, m1g sin theta. Okay, now the most important, these force will remain same, there is not any problem, as well as for the first condition. But now m2 will go upward, then frictional force will act in which direction? In this direction, in upward direction, isn't it? So frictional force will be in this direction, because we are talking about the case, we are talking about the case 2. And what is your case 2? That m2 will go upward. m2 will go upward. Then we have to go for this particular thing. So what will be your condition? Now, what is your condition? So then tension must be greater than, for m2, this tension must be greater than m2g. Yes or no? Yes. And what is your second condition? Yes, sir. This is for m2. What is for m1? m1g sin theta minus frictional force. So that will be mu m1g cos theta. So it is must be greater than tension. Yes या no? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही तो होगा. Okay. So this is greater than tension, and tension is greater than this. So this whole thing is greater than this one. Yes. So from here we can have m1g sin theta minus mu m1g cos theta must be greater than m2g. And from here, what you can get? You can get the m2 by m1 again. Then you have g sin theta minus g minus mu g cos theta must be greater than m2 upon m1. Yes. Now, this is your condition 1. Sorry, this is your condition 1. And this is your condition 2. What you have to do? You have to avoid both the condition, isn't it? Sorry. अब ठीक है ना? Yes. आपको क्या करना है? ये दोनों कंडीशन मोशन होने के लिए है या फिर मोशन को रोकने के लिए है? मोशन होने के लिए. मोशन को होने के लिए. ये दोनों कंडीशन किस चीज के लिए? मोशन को होने के लिए. So if these two condition is for the motion, then you have to write that which condition which will be the prohibited the motion, जो मोशन को रोकेगा उसके लिए कौन सा कंडीशन होगा. Then obviously ये होने के लिए है या फिर रोकने के लिए है? होने के लिए. होने के लिए. तो रोकने के लिए क्या इसका उल्टा हो जाएगा? Yes. Yes, sir.
है ना, ये तो होने के लिए है, तो इसका रोकने के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। सो यू हैव m2 अपॉन m1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। नाउ ये कंडीशन होने के लिए है या फिर रोकने के लिए? इस कंडीशन होने के से लिए मोशन सर। होगा या रुकेगा? This सर होगा। condition is for the motion. So what do you have to do? You have to just flip the sign. So when you will flip the sign, then you have basically g sine theta minus mu cos theta. So this is my condition. So if this will be my condition, then only the particle will be remain rest. Otherwise, the particle can move either in positive sign or move either in negative sign. Are you getting my point? Yes. ठीक है ना? So you can have, this is your answer. So now look at the analysis part. It's a very wonderful thing. The question is very simple. You have to give the condition that particle will rest with respect to wedge. These are the condition. But thing is that you have to restrict two different motion. The particle cannot go either upward, it cannot go either downward. So we have to restrict these two equations. Isn't it? कुछ क्वेश्चन Yes, पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए जाएंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो हमने m1g को m1g साइन थीटा और m1g कॉस थीटा में रिजॉल्व किया, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, मुझे समझ नहीं आता कि साइन थीटा किधर रिजॉल्व करना है और एकदम देख कॉस लो, बहुत थीटा। आसान है। ये एंगल थीटा है, यस सर। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यस सर। तो इसका रिजॉल्व करोगे इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, कॉस थीटा। यस सर। इसको इस डायरेक्शन में लोगे तो ये एंगल थीटा बना रहा है ना। ये एंगल कितना है? ये थीटा में ही प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ये थीटा नहीं समझ आ रहा, वो एंगल थीटा कैसे बना है। ये एंगल थीटा कैसे बना है? जी जी बाय जी ज्योमेट्री जी। आप इसको सिंपली देख सकते हो। नहीं, ओके ये सर। एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यस सर। यस सर। तो ये एंगल थीटा यस सर। हो थैंक गया, यू सर, है ना। ये समझ तो आ। बहुत सिंपल सा, यस देखो सर। ट्रायंगल देख लो ना, ठीक यस है। सर। यस सर। ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ये यस एंगल सर। थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो यस जाएगा, सर। 90 माइनस थीटा। तो इसको अपने आप थीटा 90 लेना माइनस पड़ेगा, थी। है ना। यस। तो क्लास 8 है ना, यस सर। जाके रिवाइज कीजिए क्लास 8 को अच्छे से, ठीक है। यस ऑलवेज ट्राई थैंक यू टू सर। ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर क्लास 8, ओके। ओके सर। सर। हाँ बताओ। सर ये जो एड्रेस का एक ही था सर, ये क्या डायरेक्ट क्या उसको क्या, ला थोड़ा सकते हैं या आराम से फिर पूछो, समझ में नहीं आ रहा इमेजिन क्या बोल रहे हो, करके। अपने आप में बोल रहे हो, है ना। जैसे सर, ठीक से बोलो, हम क्या बोल रहे रिजल्ट हो। लाए सर, डाउनवर्ड और अप। हम्म सर जैसे हम रिजल्ट लाए ना सर, डाउनवर्ड और अपवर्ड में, हम्म तो हम डायरेक्ट यही कंडीशन यहीं पे नहीं ला सकते, यहाँ पास जूम कर कर ना यहाँ पर लिख दिए हैं सर प्लेस देन में। क्या बोल दिया? सर जैसे रिजल्ट लाए सर m2 जी, ये वाला रिजल्ट जो है, m1 इज ग्रेटर देन sin थीटा प्लस। ये सर इस तो हम रिजल्ट के बारे रिजल्ट में वहां बात से कर रहे डायरेक्ट हो। नहीं ला सकते सर यहाँ। कैसे डायरेक्ट ले आओगे, जरा मुझे बता दो तो, कैसे सपना में आएगा ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको? नहीं सर, हम वही पूछ रहे थे सर कि नहीं आ सकता दूसरा नहीं आ तरीका सकता, कैसे आएगा, बिना कैलकुलेशन किए कैसे आएगा? हाँ, आप इसको फास्ट फास्ट लिख सकते हो, दैट इज डिफरेंट केस, बट वो पूरे फास्ट लिखने में ये सारा चीज को तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। ठीक है, अभी देखो, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा उसी तरह के क्वेश्चन होंगे। यस, यस आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आप सोच रहे हो कि एक फॉर्मूला की तरह बना दे, वैसा नहीं होता है। ओके, आपको चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके यस सर। ओके ओके, चलिए।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा मजेदार है, इसको जरा देखते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी जो स्टूडेंट ने पूछा था एंगल, मैं उसी से पूछूंगा। क्या नाम था आपका, एक बार नाम बताओ। सर रूपाली। रूपाली, वेरी गुड रूपाली। ठीक है, तो अभी तुम्ही से पूछूंगा मैं, ठीक है? यस सर। गुड। एक देखो, मास m है, ये आपका TIFR में आया हुआ क्वेश्चन पहले से ही, ठीक है? सो इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रॉब्लम, ऑसम प्रॉब्लम। और सबसे अच्छी बात है कि जिस साल आया था हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर रखा था, सो डायरेक्ट आंसर वहां टिक करने की जरूरत थी। एनीवे, तो ये हमारे पास एक मास m है। एवरीवन इज कंफर्टेबल? अब हम Yes, sir. इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं? एग्जैक्टली mg फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं हम? mg। नाउ what we have to, and this theta you can change, and this is not going to move। ये फोर्स के कारण ये वेज मूव नहीं कर सकता। दिस इज सो हैवी that it is not going to move। you can assume that it is fixed। ये आपका फिक्स्ड है, ओके? किसी भी तरह क्लैंप लगा करके फिक्स कर दिया, so it cannot move। now look at what is this question। you have to find the value of tan theta। you have to find the value of tan theta such that the particle, the block m will rest with respect to which। सेम क्वेश्चन हो गया ना? हाँ या ना? आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लगा रहे हो और इसके ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किसी साल TIFR में आया हुआ है, डोंट वरी, ओके? दिस वाज इन सम TIFR एग्जामिनेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। नाउ what you have to do, you have to find the value of theta, actually tan theta, such that this particle will rest with respect to this wedge। now look at what will happen if you will give a very light force। if mg is such that you can put this a particular mg। now mg की फोर्स तो कांस्टेंट है, यस? अब ये एंगल के चेंज होने से what is going to happen, let me first just go for the free body diagram। एक तो mg इधर लगेगा, रूपाली सही है? सर और दूसरा mg ऐसे लगेगा, है ना? ये वाला जो mg है इसको मैं हटा दे रहा हूं अब, ठीक है? सो दिस mg इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है? इस mg का इस डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा बताओ? पहले ये बताओ, ये एंगल अब तो बता दो कि ये एंगल कितना होगा? यस थीटा। सर थीटा। वेरी गुड। सो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया, क्या मिलेगा? mg cos थीटा। वेरी गुड। इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा? mg sin थीटा। वेरी गुड, दैट वैल्यू इज mg sin थीटा। हो गया एक काम? यस वेरी नाइस, वेरी गुड। अब इस mg का बात करो, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा? किस तरफ? mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा बताओ? mg cos cos 90 90 minus minus theta। theta। Very good। So mg cos 90 minus theta। What will be component of mg into this direction? mg sin 90 minus theta। Very good। mg sin 90 minus theta। And this sin Yes, theta is mg and sin theta को क्या हो जाएगा? बाद में cos theta लिख लेंगे, तो इसको लिख दें क्या? mg sin theta। Yes। yes, और इसको लिख दें क्या? mg cos theta। Are you good, Rupali? है ना? Are yes, you sir. appreciating Yes, this sir. thing? In Yes, which direction normal force is going to act? upward। Upward। Very good। अब आप देखो पूरी जगह क्या लड़ाई हो रही है। क्या आप ये इंश्योर कर सकते हो कि ये बॉडी नीचे ही जाए या ऊपर ही जाए? इंश्योर कर सकते हो क्या? No, sir. नो, बिकॉज mg cos थीटा जब भी इससे ज्यादा होगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यस? Yes, sir.
अगर mg sin थीटा इससे ज्यादा होगा तो ये बॉडी नीचे चला आएगा, इजेंट? अभी मैं फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं, फ्रिक्शन विल बी कम लेटर. So again there is chances that body can move upward as well as body can move downward. Are you people happy? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो फिर से हमें दो केस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप चीजों को चेंज करोगे, what will happen? The direction of frictional force is going to change. मेरी आवाज आ Yes, रही है? Everyone is clear? है ना? Yes, sir. Yes. हाँ, Yes. क्योंकि जस्ट अभी 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी, जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. एनीवे, गुड. सो hence the frictional force is self-adjusting force. Can I say this statement? Yes, sir. Yes. Why? Because जैसे ही मोशन का डायरेक्शन अपना चेंज हो रहा है, वो direction अपने अपने आप आप को change क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है ना? So let's try to go for case 1. और उससे पहले, what will be value of normal force here? What will be value of normal force? N equals to mg cos theta plus mg sin theta. Very good. N is equal to mg cos theta plus mg sin theta. Are you people happy? N is equal to mg cos theta plus mg sin theta. This is your normal force. Everyone is comfortable here? Yes, sir. Yes, sir. Great. Now, अब हम काम करना शुरू करते हैं. केस 1. M will go downward. M will go downward. So if M will go downward, what will be direction of frictional force? Upward. Upward. है ना? So your frictional force will in this direction. Case 1 के लिए, है ना? This is for case 1. So if M will go downward, that means, can I say that mg sin theta must be greater than mg cos theta plus frictional force? Yes or no? Yes, sir. Yes. So what you can write? mg sin theta must be greater than mg cos theta plus frictional force. What is frictional force? Mu into n. And now please, n is not your mg cos theta. N is your mg cos theta plus mg sin theta due to this particular horizontal force. Hence, you are giving some extra push here. The normal force is going to increase. It is very difficult. So this is just pushing in this direction with a very high quantity. There are one more forces acting on this. One is weight and another is applied, the component of applied weight in the direction of against the normal. So what you can do, you can write this particular thing. mg sin theta must be greater than mg cos theta plus, what will be this value? Mu mg cos theta plus mg sin theta. So what we can do, mg तो सारे जगह कैंसिल हो जाएगा, सबको cos theta से डिवाइड कर देते, because we have to give the answer in term of tan theta. Are people happy? Okay. So tan theta is greater than 1 plus mu plus mu tan theta, isn't it? And you can take this thing into this direction. So you have tan theta 1 minus mu must be greater than 1 plus mu. So tan theta must be greater than 1 plus mu by 1 minus mu. Yes या no? सही कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Tan theta is greater than 1 plus mu by 1 minus mu. Everyone is comfortable? Okay.
Now what will be your case 2? अब जरा केस 2 के लिए फटाफट बता दो क्या होगा. Now your frictional force किस डायरेक्शन में है? केस 2 is what? When m1 m is will go upward. दिखाई दे रहा है आपको ना बोर्ड पर सारा चीज, है ना? So मैं ये यूज कर रहा हूं. केस 2 m will go upward. So if m will go upward, what is meaning of that? Meaning of that, mg cos theta must be greater than mg sin theta plus frictional force. अब frictional force किस डायरेक्शन में लगने लगेगा? In this direction? Downward. In downward direction. So this is your frictional force. So now you can go for this thing. mg cos theta must be greater than mg sin theta plus frictional force, that is mu into n. N will remain same, and that value is equal to mg cos theta plus mg sin theta. Everyone is comfortable? And then Yes, Sir. from here you can easily get tan theta is less than 1 minus mu plus by 1 plus mu. You can just do the same thing and you can get this thing. Now, अब ये बताओ, ये मोशन होने के लिए है या फिर नहीं होने के लिए? होने के लिए. होने के लिए. ये होने के लिए है या फिर नहीं होने के लिए? Yes sir, होने के लिए. होने के लिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रिवर्स लेना पड़ेगा. Yes? Yes sir. So, if your tan theta is between, किसके किसके बीच में? उससे ज्यादा होना चाहिए? यस या नो? tan थीटा सॉरी इससे कम होना चाहिए? ज्यादा होने पर क्या हो रहा है? इसकी मोशन हो रहा है, isn't it? Yes sir. Yes, तो इससे कम होना चाहिए ना? So this value is equal to 1 plus mu 1 minus mu. And यहां पर इससे क्या होना चाहिए? कम है तो इससे ज्यादा होना चाहिए. So you have 1 minus mu 1 plus mu. If you have this sort of information, then only this particle is going to rest. So that will not depend on what is your m, because you are just, it will just what is your nature of coefficient of friction. If you know this status, you can just get this particular thing. देख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. Sir. How we will write n equals to mg cos theta plus mg sin theta? This one, Yes, sir. because this is your normal force, there is not any vertical Yes, sir. motion. So this force is equivalent to this one. Okay. Okay? Okay. Okay. Chalo. Everyone is comfortable now? Yes sir. Okay. Chalo. Yes? Sir, whenever there is the talk about race. Sorry, and, whenever there is talk friction about? involved in Sorry. race, I'm not getting you. particle is at rest. Yes, okay. Rest. Okay, yes. Huh. Yes, sir. And friction is involved, then we will talk in range. Obviously, you have to restrict all possible motion, isn't it? Yes, sir. Sometime it is not necessary that there is all motion are possible, depend on situation. But yes, when it is there, whenever someone will ask you what will be condition that it is unrest, then you have to restrict all the possible motion. In general, which type of mistake we are doing, we just always assume that this particle will go downward. Are you getting my point? Yes, sir. है ना? But you can see there is one force also acting in upward direction. So it is not necessary that your particle will go downward. There is chances that your particle can go upward, depends on theta. Because cos theta and sin theta both are the contrast thing. When cos theta is less, sin theta will be more, and when cos theta will be more, sin theta will be less. Isn't it?
Yes. Even friction is not there, there is always competition between this sine theta and cos theta, isn't it? Yes. Suppose friction is not there, then also there is competition. If sine theta is greater than cos theta, then particle will be go downward. So you have to see the range. This question is also very beautiful question, isn't it? So there will be Yes, one sir. threshold point where cos theta and sine theta will remain same. And what will be that point, that angle? 45 degree. Isn't it? Yes, sir. So at the cos 45 degree, this value and this value will remain same. Otherwise, it will go either upward or it will go downward. Isn't it? Yes, sir. Okay. So now let's try to go for one more problem. This is also very wonderful problem. करें क्या? Next जाए? Yes, sir. Okay. Now look at this problem. This is very interesting one. There is some force and you are applying this force with some angle with the horizontal. This is your force F. Okay. And let's say this mass is M. The coefficient of friction is mu. So there is coefficient of friction. So what you have to do, you have to calculate the maximum value of force such that this particle is rest with respect to this one. इसके respect में ये क्या रहेगा? Rest रहेगा. You have to give the maximum value. Or let me tan check. theta equals to mu होना चाहिए था. Let me just give you the final version of the statement. No, tan theta is equal to not mu actually. I am just giving you the final version of equation question. Okay. Sorry. You have to calculate the minimum value of f, not maximum. Maximum तो कुछ भी हो सकता है. So you have to calculate the minimum value of f such that it will become rest. Minimum. You have to calculate f minimum. How you will go for this? And this will just making some angle. Okay. So how you will go for this? Obviously, you have to resolve this thing. And look at here. In this problem, this particle have to be rest for some minimum value of f. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. Now, so if we are going to resolve these forces, so one force is what? mg. Yes. And you have this two direction of force. This is angle theta. So this will be f sine theta. And this will be what? F cos theta. And there is also normal. And what will be normal? This will be your normal, perpendicular to surface. Now the question is that, what should be your direction of frictional force? Upwards. Upward. Why? Sir, force का minimum चाहिए हमें. Exactly. Very good. So you have to just talk about the minimum value of this particular force. So if you will have less than this particular minimum value, there are fair chance that particle will go downward, isn't it? Yes. Yes, sir. That Yes, sir. means the possible motion for the minimum force is that particle will fall down
So this will we go in which direction? Upward direction. The frictional force will in upward direction. So now we have, and now this force have to balance with the vertical force, all the vertical force, because motion is in vertical direction. So what we can write? We can write mg minus f sine theta plus, sorry, minus frictional force must be equal to 0. Okay. And now, what is this frictional force? Frictional force यहाँ किसके equal है? F cos theta. F cos theta. So this is very interesting. Sorry, normal force is equal to what? Normal force is equal to what? F cos theta. So this frictional for the limiting case, we have mg minus f sine theta minus mu f cos theta must be equal to 0. And from here, we can find f is equal to mg by sine theta plus mu cos theta. Now, it's a very trivial problem. It's a not so exciting. You have to just balance all this thing. Now the problem is entirely different. Look at this problem. You have to find the minimum value of, we have to find the value of theta for which force is minimum. Now your theta is can be variable. अगर अब थीटा को भी आप वेरी कर सको जिसके लिए मिनिमम फोर्स निकालना है. Are you getting my point? Yes, sir. So this is your force at some particular angle theta. Now your theta is going to vary. So what you have to do? You have to calculate value of theta for which force is minimum. Value of theta for which force is minimum. So obviously, if this constant will be maximum, then this force will be minimum. Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? If this value will be maximum, then force is what? Minimum. So what we have to do? We have to maximize this particular value. So we have to find the maximum value. We have to find, so actually we have to find the value of theta for which sine theta plus mu cos theta is maximum, isn't it? So now how you will get it? You have to differentiate it. आप इसको क्या करोगे? Differentiate करोगे. So when you will differentiate it, sine theta को difference. So you have to just go for d upon d theta, and you have sine theta plus mu cos theta must be equal to 0, and then you can get this value cos theta minus mu sine theta is equal to what? 0. So what is value? Cot theta, na? So cos theta is equal to mu sine theta, or tan theta is equal to what? 1 upon mu. So tan theta की value क्या मिल रहा है? 1 upon mu. So from here you can get tan theta is equal to 1 upon mu. Yes? Yes, sir. तो अगर tan theta की वैल्यू 1 upon mu मिल रहा है तो sin theta का भी वैल्यू मिल जाएगा और cos theta का भी वैल्यू मिल जाएगा. What is sin theta? Sin theta क्या होगा? बताइए. 1 upon 1 plus mu square root under. This is your sin theta. What is your cos theta? Mu upon, Mu by sorry, 1 plus mu root over upon 1 plus. root under 1 plus mu square. So you can put this particular value here, and then you can get the
F minimum is equal to mg by 1 by रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस एक म्यू तो यहां पर है ही म्यू इंटू म्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट अंडर क्या वैल्यू मिल रहा है mg by root under 1 plus mu square, isn't it? Yes, sir. है ना? So this is your F minimum. Are you getting my point? Yes, sir. है ना? तो यहां पर ये थीटा जो है, सो आप इसमें देखो क्या ट्रिक प्ले किया. इसमें पहले हमने ये ट्रिक प्ले किया कि सर जस्ट ट्राई टू टेक any particular value theta where your force is minimum. So now we can go for equation of motion. Then we have get the final value of theta for which this force is going to minimum. So again you can get this because this theta is variable. You can put this theta here, this theta here, this theta here, this theta here. You can have this kind of thing. And now you can see this is one of the very interesting point. There is one of the very interesting point. This tan theta, there may be possibility that this tan theta may be negative. Is that possible? Tan theta की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकता है. Yes, sir. है ना? Mathematically what you can have this tan theta can be some negative value. So what will happen when your mu is negative? This is not possible. So what is meaning of that? Meaning of that at that time whatever the force you are going to apply, the particle will go downward. You cannot restrict it. There may be this case. There may be. हाँ? tan theta वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? भाई ये थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना. 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा पुट नहीं कर सकते हो. इन वैल्यू पर तो अरे बाबा नेगेटिव. आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हो ना. थीटा इज वेरिएबल. हाँ हाँ भाई थीटा की वैल्यू ये वैल्यू है तब तो ठीक है. लेकिन अगर थीटा की वैल्यू अगर आप ऐसा पुट कर दो जिसमें कि नेगेटिव आ जाए tan थीटा की वैल्यू, तो दिस इज नॉट अ फिजिकल थिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको होल्ड कर सको. तो आपने जो इक्वेशन लिखा है होल्ड करने का, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग थिंग. ओके, क्लियर है ये? Yes, sir. Okay. So now you can see we have done 3 problem and all these 3 problem is a wonderful problem. ठीक है? इसको आप 3 प्रॉब्लम मत समझो. इसको आप ये समझ सकते हो कि how you can adjust each and everything. किस तरह से वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल यूज कर सकते हो. सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन होमवर्क. सो जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग. एक होमवर्क दो, करके भेजोगे इसे? Yes, sir. है ना? Yes, sir. So this is very simple one, but please try to give me answer. कल हम लोग और भी पुली के क्वेश्चंस कल करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? So tomorrow we have last day of this one. सर इस क्वेश्चन को हम रेंज से तो नहीं कर सकते ना, जैसे हमने पहले नहीं जो नहीं, इसमें प्रॉब्लम तो सॉल्व एफ मिनिमम पूछ लिया ना. ओके सर. ठीक है? अगर एफ मिनिमम नहीं पूछता तो फिर हमें करना पड़ता है कि भाई ज्यादा पुश करेंगे तो ऊपर भी चला जाएगा, कम पुश करेंगे तो नीचे भी आएगा. ओके, ओके सर. एफ मिनिमम पूछने का मतलब ही है कि आप इसको नीचे जाने से रोक रहे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस. है ना? तो एफ का अगर इफ समवन विल आस्क यू द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट पार्टिकल विल रेस्ट, नाउ दिस कैन बी आल्सो योर क्वेश्चन, इजंट इट? Then you have to restrict yourself particle going downward as well as it is going upward. Are you getting my point? यस सर. हाँ, तो यहाँ पर एफ मिनिमम पूछने के कारण हमें रेंज में जाने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. दिस इज वंडरफुल प्रॉब्लम. आई होप कि आप इसको जरूर करोगे. है ना? दिस इज योर मास m and this is your capital mass M. Okay, और this surface is frictionless. There is
mu, and you have to apply some force F, and this is frictionless. So find the F minimum such that small m will rest with respect to capital M. ओके, हो जाएगा ये। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही आप इस पर पुश करोगे तो दोनों ही मूव करने लगेगा, इजंट इट? इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल तो मूव करेगा ही करेगा, बिकॉज देयर इज नॉट एनी फ्रिक्शनल फोर्स। सो यू हैव टू जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट दिस वन। ट्राई कीजिए, कल मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा, ठीक है? एंड टुमारो वी Yes, sir. विल जस्ट फिनिश दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो मेन मेन चीज है उसे फिनिश करेंगे। ओके ओके सर। ओके, चलो, थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू। Right.